Hey, welcome to Barbershop Clips. This is a channel where you get to see really cool moments from the barbershop. I know the episodes are really long, but you can come here and enjoy really cool moments in short time as well. I hope you enjoy. But because of Shark Tank, I'm assuming you have a lot of people who come up to you who are probably 17, 16, 17. For us also, do you know that the first product that a man buys to shave himself 10 years back used to be a 20 to 30 rupee razor? वो जो सस्ता वाला मिलता है गार्ड सुंदर प्रोडक्ट है जिलेट का 17 एक वो बिग का भी आता है ना बिग का भी आता है बट इंडिया में मोस्टली गार्ड बिकता है गार्ड इज द नंबर वन प्रोडक्ट 25 to 30 रुपीज का टुडे द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट अ मैन इज बाइंग इज अ 400 रुपी ट्रिमर एट द एज ऑफ 14 400 रुपये बिकॉज अभी दाढ़ी रखने लगा तो ट्रिमर ट्रिमर चाहिए यहाँ पे आ रहे हैं 14 साल की उम्र में यहाँ पे आ रहे हैं पहले डेट पे जा रहे बच्चा स्कूल में है यू नो सो 400 रुपये No, I would never, unless I'm not a father, but if I had a nephew or whatever, that conversation will be very infrequent for me to know this. But now, because I'm closer to the consumers and they come up because they've seen the podcast or I get invited to schools or whatever, I suddenly realize this is where the market is. The first, I enter his bathroom not at 18 and now at 14, and I need to enter with trimmer, and that's the thing. Like, yeah, that's a great insight. मतलब नहीं पता ना आपने को. वो ऐसे मार्केट रिसर्च से नहीं समझ में आता है. और young kids तो बहुत like I feel very distant from them psychologically. What do you think? What role does this market research have a role? I struggle with market research. They are market research. I think they are focused so much. They're very manufacturer. I'll tell you about my industry. Any Nielsen or any of these guys are very manufacturer first. कि अगर उनको face personal care देखना है, face wash, face scrub, ये वो मॉइस्चराइजर करके कैटेगरी बना के उसका रिटेल आउटलेट में जाके सैम्पलिंग करा के दे गिव यू अ गुड सेंस ऑफ. बट कंज्यूमर के बाथरूम में कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कब यूज़ कर रहा है, वो ओकेजन क्या है, वो क्या फील करता है, वो कितना लेता है, हाथ में लेता है या फिर सीधा चेहरे पे लगाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द थिंग्स विद मॉइस्चराइजर इज और फेस क्रीम इज women apply it in dots around the face and then spread it. Men do this. Men put on the hand and then spread it. So the insight is that there is no market research to tell you this. It requires a human being to observe 25 people and take diligent notes and do that. And that never comes from an agent. तो वो नहीं समझ में आता है. People you can understand attitudes but you can't understand behavior. Take tomato ketchup. The tomato ketchup. Also people I think when you put them under the scanner जैसे आप अगर फोकस ग्रुप करते हो, मेरा तो ये प्रॉब्लम रहा है मार्केट रिसर्च के साथ कि अगर तुम लोगों को बुला के पूछते हो कि मैं तुम पे मार्केट रिसर्च करूंगा तो कैसी मार्केट रिसर्च होनी है यार. वो ही बोलेगा that makes him look good in that crowd. Everybody wants to impress all the time, right? People either become compliant or contrarian. They are never honest. They follow one of these two. For example, the tomato ketchup industry went through the roof in India 15 years back. And it was only because of one reason. It's not because our diets changed or our tastes changed or the prices went up or down. It's because Indian consumers don't like to waste. Tomato ketchup in the world was always sold in glass bottles. और इंडिया में जब वो कांच की बोतल खत्म होती थी ना, वो जो लास्ट का बचता था वो ऐसे करके लोग निकालते थे, ऐसे करके people didn't like it. And someone invented the pichku, the plastic pouch which had that pichku thing. You could squeeze the whole thing out. That's when people were like, cool, अब waste नहीं हो रहा है, अब खरीदेंगे. And that's when Maggi and Kisan tomato ketchup went up because kids love it. Noodles के साथ खाओ. हाँ, किसी कोई भी चीज़ के साथ मतलब खाने को disguise. The insight was that the packaging has to be the insight. It was not about the product or the sweetness or even the price or even the distribution. Because Maggi and Kisan were distributed everywhere. But it was the packaging insight. So for me as an entrepreneur in the consumer space, I have to, every time if I come to your house, मैं पक्का आपके 2-3 बाथरूम में जाके देखूंगा कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कहाँ पे क्या रखा हुआ है. अच्छा क्या बता दिया. रेजर कहाँ पे है, पहले सफा करा दूंगा सारे बाथरूम जब मैं आने से पहले. आई एम लखनऊ जा रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल फॉर रिक्रूटमेंट. आई विल 100% मेक अ विजिट टू द हॉस्टल्स एंड सी 10 बॉयज रूम्स कि वो टॉयलेटरी के जो खांचे में क्या रखा हुआ है आपने. तुम्हारा बार्बर शॉप से द बाथरूम विस्परर नाम रखना चाहिए. बट दैट्स द थिंग विद धंधे में शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना. करेंगे नहीं ना बिल्कुल. किसी के बाथरूम में घुस जाओ मतलब. एंड आई एम तो बाथरूम में घुसना, हम तो लाइक व्हेन पीपल कम फॉर इंटरव्यू हम तो गाल को टच करते हैं कि क्या यूज किया आपने, व्हेन डिड यू लास्ट शेव, व्हेन डिड यू डू दिस. भाई तुम थोड़ा केयरफुल रहिए. अच्छा बॉब with consent. Hey, we also are in the women's space by the way, and you will be amazed how different women's habits are
for younger consumers versus like I'm 37. My age, women hate shaving because they feel कि दाढ़ी कड़क आएगी. अच्छा, I thought those attitudes would have changed. No. They change when they Then see the goal wasn't the evolution from waxing to shaving? No, but that's not happened ना. That's not India में happened. West में हुआ ना? West में हो गया because waxing महंगा है. हाँ. India में नहीं हुआ क्योंकि waxing सस्ता है. और inconvenient भी है. Inconvenient के लिए लोग पैसे दे देते हैं. मतलब people are like because people are busy ना, तो they want convenience. Shave खट करके निकल गए काम पे. But also Western world has blonde hair on white skin or black hair on black skin. We have black hair on brown skin. Right. So our hair is very visible. For women, they don't like it. That's a very interesting point. So they want all of it. Because shaving will show the roots. So you will be able to see the... Very quickly. Right. 2-4 दिन नहीं दिखेगा. 5 दिन दिख जाएगा. Waxing में 1-8 महीने तक दिखता है. So what is the preference these days? So women today have a combination of waxing and shaving, but the younger women. But the laser नहीं कराते हैं. आजकल तो सब निकाल लेते हैं. It's the best hair care, but it's a 1.5 year process. 60-70 हज़ार की वो पूरी ट्रीटमेंट है. काया में जाओ या जहाँ पे जाओ. So it's not. So mostly people are doing waxing still. Most people. मेरे को तो सोच के ही दर्द होता है. हाँ. It's but women like they do it in intimate areas. My daughter keeps putting stickers and doing this to me. I say, what? How old is she? She's only 6. She's very young. But younger women are actually now very comfortable shaving. Especially in like शाम को डेट पे जा रहा है स्कर्ट पहनना है. यहाँ पे थोड़े बाल दिख गए patchy hair. They don't like wait for a waxing. So waxing is periodical and then shaving you do. So instead of waxing 12 times a year, you're now waxing 3-4 times a year and then maybe before. So you guys are making waxing products as well. We make waxing strips, but we do all DIY stuff. Okay. घर पे करो. और लेकिन अपने आप करो. And the brand. So one realization for us was we targeted older people because we thought उनके पास पैसे होंगे. But we didn't realize that a 28-year-old man has been shaving for 10 years. Wow. तो उसके हाथ से जिलेट निकालना impossible है. तो 18 साल के बच्चे को पकड़ो. पैसे बाद में आएंगे उसके पास. हाँ. लेकिन ability to switch और नहीं चेंज करता बाद में. बहुत difficult. And जिलेट बहुत ही सही प्रोडक्ट है यार.